Okay. शुभम सर डे 4 है ना आज? हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। Welcome to the session, guys. As I can see that students are still joining, so let's just wait for 2-3 more minutes, and then we'll be starting with the session, guys. So in today's session, we'll be starting with the concept of relative speed, guys, and we'll see what are the different types of questions that can be solved using this concept. Okay.
We'll have a look at the questions that we've already discussed in the last 2-3 classes. We'll see how those questions can be solved easily using the concept of the relative speed limits. ठीक है, चलिए फटाफट से concept को समझ लेते हैं. Let's say there is a platform over here, है ना, and there is a person A standing in this platform, guys. ठीक है, so this person A is at rest currently. Okay, he's not moving, and there's a person B over here. This is my person B, and he's moving towards right with the speed of 20 meters per second. Okay. Now, if I try to figure out the speed of the person B with respect to, if I try to figure out the speed of the person B with respect to the person A, in that case, the speed of the person B is going to be 20 meters per second. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि यार एक सर्टेन पर्सन है, पर्सन बी, उसकी एक स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और उसकी स्पीड अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, मतलब ए अगर रेस्ट पे होगा तो ए को पर्सन बी किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, इसे हम क्या बुलाते हैं, स्पीड ऑफ पर्सन बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ओके, व्हेन द पर्सन ए इज नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन, व्हेन ही इज एट रेस्ट, and at that particular moment the person B appears to be moving at 20 meter per second. So this is called as a relative speed. This is the speed of B relative to the person A. या A के respect में B की speed कितनी है. ठीक है, similarly if let's say there is a person C over here in the platform itself and he is moving towards right with the speed of 30 meters per second. ठीक है, now if I try to figure out the speed of the person C with respect to the person A, in that case I can see that the person A is standing still over there, है ना. So the speed of C with respect to A is the speed at which C appears to be moving to the person A. A को C कितना स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, वो हो जाएगी स्पीड ऑफ C with respect to the person A. कितनी हो जाएगी, वो भी 30 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि A जो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और C जो है वो मूव कर रहा है एट द रेट ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. नाउ इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्सन सी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन बी, नाउ थिंग्स आर गोना चेंज अ बिट गाइस. ठीक है, अभी बी जो है इट इज ऑलरेडी इन मोशन, सी इज ऑलरेडी इन मोशन, है ना. इफ आई वांट टू फिगर आउट द स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन बी, नाउ इन जनरल द स्पीड ऑफ सी इज 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी इट मींस बी अगर खड़ा है और बी अगर उसको खड़े होकर देखना चाहेगा या बी को किस तरीके से सी मूव करता हुआ दिखेगा, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना. सो इन दैट केस टू द पर्सन बी सी विल नॉट बी appear to be moving at 30 meters per second. To the person B, C will appear to be moving only at the speed of 10 meters per second, guys. If you want to understand this thing, you can look at it in this particular way. Let's say you are moving in a vehicle, yeah, you are driving a vehicle which is at the speed of 60 kilometers per hour, and another vehicle overtakes you. Okay, definitely the vehicle that is overtaking you should be moving at more speed. So let's say that vehicle is moving at 70 kilometers per hour. Okay, the vehicle will appear to be moving at 70 kilometers per hour to the person who is standing on the ground. But to you, who is already moving at a certain speed, let's say 60 kilometers per hour, to you the vehicle will not be appear to be moving at 70 kilometers per hour. It will appear to be moving at 10 kilometer per hour only. हम अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं एक सर्टेन स्पीड से, कोई हमें ओवरटेक करता है तो उसकी ओवरटेकिंग की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो हमें ऐसा दिखता है धीरे से वो हमें ओवरटेक कर रहा है. तो ग्राउंड में जो खड़ा है उसके हिसाब से वो बहुत तेज चल रहा होता है, लेकिन आपकी अपनी कार में आप बैठे हो, आप देख रहे हो कोई ओवरटेक कर रहा है तो वो दिखता है हमें बहुत स्लो जा रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें दिखती है उसकी रिलेटिव स्पीड. ठीक है, हमारे रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है तो वो कम होकर दिखती है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही इसको देखूं पर्सन बी को, पर्सन बी इज ऑलरेडी मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड, तो सी विल नॉट अपीयर टू बी मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड. वो कुछ लेस स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा. कितने से दिखेगा, 10 से करता हुआ दिखेगा. नाउ हाउ डू यू फिगर आउट दिस 10 मीटर पर सेकंड? What you do is you keep this B in the state of rest and you give the velocity of B to the person C. आप जो पर्सन बी है उसकी जो उसको रेस्ट पे डाल देंगे और उसकी जो स्पीड है वो सी को दे देंगे और रिवर्स करके देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे. ठीक है, सो आई जस्ट कीप दिस बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मैंने इसे फिक्स कर दिया है ना. नाउ दिस हैज बिकम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्पीड ऑफ बी विल बी गिवन टू द पर्सन सी आफ्टर रिवर्सिंग इट. ठीक है, स्पीड ऑफ बी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, उसको मैंने रिवर्स कर दिया तो वो इस डायरेक्शन में हो गई, तो सी को इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकल गई. ठीक है, नाउ सी 30 meter per second towards life, right,
20 meters per second towards left, it means overall it's going to be 30 minus 20, which comes out to be equal to 10 meters per second. So with respect to the person B, C will be moving at 10 meter per second in the right direction, guys. ठीक है, कैसे निकालना है हमको, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट पे ले लेना, उसकी स्पीड उल्टी करके दूसरे को दे देना। एक ही केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ था कि ए ऑलरेडी रेस्ट पे था, इसलिए डायरेक्टली चीजें आती थी, है ना। द स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज गोना बी 10 meters per second टुवर्ड्स राइट, गाइस। वैसे ही अगर मैं देखूं कि सी को किस तरीके से दिखेगा बी मूव करता हुआ, इट मींस स्पीड ऑफ द पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन सी। नाउ अगर आप सी हैं, अगर आप 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो आपका जो पर्सन बी है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट वो आपको ऐसे अपीयर होगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। पर्सन बी आपको इस तरीके से अपीयर होगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सी, इफ यू वांट टू फिगर इट आउट, व्हाट यू विल डू इज यू विल फिक्स द पोजीशन ऑफ सी, ठीक है। आई जस्ट इरेज द प्रीवियस पार्ट, है ना। नाउ you'll just fix the position of C and you'll give the speed of C to the person B after reversing it. Okay, so this will be given as 30 meters per second towards left. Okay, so the person B will appear to the person C as if he is moving in the backward direction at the speed of 30 minus 20 is equal to 10 meters per second, है ना। आपका overall 30 left में है, 20 right में है, तो it's gonna be overall 10 meters per second towards right, है ना। The person B will appear to the person A as if he is moving at the rate of 10 meters per second towards left. ठीक है, it's gonna be again 10 meters per second, but now in this case it is gonna be towards left, guys. ठीक है, this is the whole concept of relative speed. We'll just solve 2-3 more questions on this and it will help you in understanding things better, guys. Chali. If you have understood the concept, you can just type a yes in the chat box, guys, and in case if you still face difficulties, you can mention that thing in the chat box as well. I'll be more than happy to repeat the concept once again. Okay, for now I'll just move ahead. Let's just take another example to understand the question, guys. Let's say this is my platform once again, okay, and this is my person A who is moving towards right with the speed of 2 meters per second. Yeah? Let's say this is my person B, okay, who is moving towards left, who is moving towards left at the speed of 3 meters per second. Okay, and let's say this is a person C over here. Okay, C जो है वो दूसरी रोड पे खड़ा हुआ है, and C is moving towards right with the speed of 4 meters per second, guys, है ना। Now if I want to figure out the speed of person B with respect to the person A, speed of person B with respect to the person A, it means speed needs to be found with respect to the person A, so I have to keep this A in the state of rest, ठीक है। ए को जो है मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में डाल दूंगा। जिन जिनको डाउट हुआ है पिछले वाले में, जो लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, वो यहाँ पे दोबारा देख के समझिएगा, ठीक है। मुझे निकालनी है ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट, सॉरी बी की स्पीड निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ए। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको हम मान लेते हैं रेस्ट पे, और उसकी स्पीड जो है वो दूसरे वाले को दे देंगे उल्टी करके। मतलब ए की जो स्पीड है वो राइट डायरेक्शन में थी, उसको मैं लेफ्ट डायरेक्शन में दे दूंगा बी को, है ना। कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। So B was already moving towards the person A at 3 meters per second. उसको 2 meters per second और मिल गया, तो 3 plus 2 is gonna be equal to 5 meters per second, guys. Similarly, if I want to figure out the speed of the person B, okay, speed of the person B with respect to the person C. Now, if I want to figure out with respect to the person C, what I'll do is I'll just keep the person C in the state of rest. Okay. Now this is my person C who is moving towards right at the speed of 4 meters per second, and this is my person B who is moving towards left at the speed of 3 meters per second. ठीक है, तो C के रिस्पेक्ट में निकालना है, just keep the C in the state of rest, and उसकी स्पीड जो है मैं किसको दे दूंगा, person B को दे दूंगा, लेकिन कैसा करके, उल्टा करके देना है मुझे, ठीक है। तो 4 meters per second उल्टा होके होगा तो इस तरीके से मिलेगा। तो ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में था, 4 मीटर पर सेकंड और मिल गया, तो 3 plus 4 is gonna be 7 meters per second. Okay. Similarly, let's say if I want to figure out the speed of the person A with respect to the person C, ठीक है। अगर C A को देखना चाहता है तो C को A कैसा दिखेगा, है ना। तो अगेन स्पीड ऑफ A निकालना विथ रिस्पेक्ट टू C, सो आई जस्ट कीप C इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में डाल दूंगा, उसकी स्पीड उल्टी करके पर्सन E को दे दूंगा। तो कितनी हो जाएगी, 2 से राइट में, 4 से लेफ्ट में, तो ओवरऑल इट्स गोना बी 4 minus 2, राइट, है ना। So it's gonna be 2 meters per second, but in which direction? Left direction, guys. ठीक है, यहाँ पे भी speed of B with respect to A कितना था, 5 meters per second in this direction,
स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आया था आपका 7 मीटर्स पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, ये भी आ रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर्स पर सेकंड। और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ए का सी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, है ना, तो वो निकाल लिया हमने। स्पीड ऑफ सी आल्सो वी कैन फिगर आउट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ए, है ना, स्पीड ऑफ सी कुड बी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ए। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ए को रेस्ट पे रखना पड़ेगा, इसकी स्पीड उल्टी करके सी को देनी पड़ेगी। तो 4 से राइट में है, 2 से लेफ्ट में हो जाएगा, तो 4 - 2 इज गोना बी 2 मीटर्स पर सेकंड, बट नाउ इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट गाइस, व्हाई, बिकॉज़ सी स्पीड वाज 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ए का मैंने उल्टा करके इसको दिया, तो फिर 2 से लेफ्ट में हो रहा है, 4 से राइट, मतलब ओवरऑल राइट में जाएगा ये, 4 - 2 इट्स गोना बी 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। Also we can find the speed of the person C with respect to the person B, है ना, तो C is 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, B का उल्टा करके इसको देंगे तो फिर उल्टा करके 3 और वापस से मिल जाएगा, तो 4 + 3 is going to be 7, so it has to be 7 meters per second towards right, ठीक है गाइस। अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो स्ट्रीम तो लाइव चालू है, थोड़ा सा पीछे की तरफ स्क्रॉल करो और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है हम उसे रेस्ट में डालते हैं, उसकी स्पीड उल्टी करके हम दूसरे को दे देते हैं, ओके। सो whomsoever's respective speed needs to be found. For example, if I want to find the speed with respect to the person A, I need to keep the person A on rest and I have to reverse the speed of the person A and give it to the other person, ठीक है। For example, if I want to figure out the speed of B with respect to A, I have to keep A on rest, reverse the speed of A and give the reverse speed to the person B and then calculate what is the final value guys, ठीक है। चलिए, again if anyone has any doubt you can mention this in the chat box guys, okay। Let's have a look at some of the questions that could be solved using the concept of relative speed. For example, I have a person A and I have a person B. The distance between these two people is exactly 1000 kilometers, let's say. Now person A is moving towards right at the speed of 40 kilometers per hour and person B is moving towards left at the speed of 60 kilometers per hour. Now the question is how much time will it take for both of them to meet each other, okay। Person A has started his journey at 40 km per hour towards right, person B has started his journey at 60 km per hour moving towards left, ठीक है। ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। तो बताइए कि यहाँ से कितने घंटे बाद ए और बी एक दूसरे से मिल जाएंगे, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। आप इसे रिलेटिव स्पीड से कर सकते थे, कैसे, मान लीजिए यू फिगर आउट द स्पीड ऑफ द पर्सन बी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ए, ठीक है। आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेट्स से यू आर फिगरिंग आउट द स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, with respect to A it means A you have to keep it on the state of rest and you have to reverse the speed of A, मतलब reverse speed is gonna be this direction, है ना, and give this reverse speed to the person B, so B will be getting a reverse speed in this direction at 40 kilometers per hour, so B will have a total speed of 60 plus 40 is equal to 100 kilometers per hour, and because A is at the state of rest B has to cover this whole 1000 kilometer to meet the person A guys, ठीक है। पहले ए और बी एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब मैंने ए को रेस्ट पे ले लिया तो बी को पूरा 1000 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा उसको मिलने के लिए, है ना। आई नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, so B has to cover a distance of 1000 kilometers but now the speed is increased to 100 kilometers per hour, ठीक है। let's say time taken is t, so the value of t will come out to be 00 से 00 कटेगा 10 hours, ठीक है। so how much time will it take for A and B to meet each other, it will take 10 hours for A and B to meet each other, है ना। this is how you can use the concept of relative speed. Thank you for the responses, Ketan. Really appreciate that. Others also, please keep responding in the chat box. If you are able to understand, please mention that thing. If you're not able to understand, to mention that thing as well. Also, keep supporting us, guys. Please like the video if you are able to connect with the questions. चलिए, जहां जहां दिक्कत आएगी वहां वहां मुझे रोकते जाना, मैं चीजें रिपीट कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, बट अगेन जिसको जहां दिक्कत आएगी मैं उसके लिए रिपीट कर दूंगा, तो मेंशन कर देना चाहिए। I'll move to the next question. Let's say there's a person A standing over here who has now started walking and he is walking at the speed of 10 kilometers per hour, okay। now there's a person B over here, okay, he is walking towards right at the speed of let's say 2 kilometers per hour, okay, and the distance between the person A and the person B is exactly equal to
let's say 48 kilometers. Okay, the person A and the person B, distance between them is 48 kilometers. So after how many hours the person A will be able to meet the person B? ठीक है, आपको पूछ रहा है कि the person A is moving towards at 10 kilometer per hour, B is moving towards at 2 kilometer per hour. Find the time taken by the person A to meet the person B. ठीक है, what you will do, you can just use the concept of relative speed, guys. You will figure out the speed of the person A with respect to the person B. उससे क्या होगा, I am figuring out with respect to person B, so I can keep B in the state of rest and give his speed to the person A by reversing it. B को जो है मैं रेस्ट पे डाल दूंगा और उसकी स्पीड जो है वो किसको दे दूंगा, A को, लेकिन उल्टी करके दूंगा. उल्टी करके दूंगा मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर से मिलेगी A को. So A already had a speed at 10 km per hour in right direction. He has now a speed of 2 km per hour in left direction. So 10 minus 2 comes out to be equal to 8 kilometers an hour. So overall now the speed of A is 8 kilometers an hour. B जो है वो आपने उसको एक जगह पे खड़ा कर दिया है, right? So B will not be moving. So A has to move to the person B to cover the distance. ठीक है? So again, distance is equal to speed into time. The distance that needs to be covered is of 48 kilometers. Speed now is 8 kilometers an hour, and let's say t is the time. The value of t comes out to be 6 hours, guys. मतलब person A को person B को मिलने में कितना टाइम लगेगा? टोटल 6 घंटे लगने वाले हैं, guys. ठीक है ना? अभी इसके पहले तक आप क्या करते थे, बोलते थे कि लेट आफ्टर t hours the person A is able to meet person B. तो उतने में आप बोलते थे कि यार ये डिस्टेंस कितना होता है, 2t होगा. ठीक है, फिर जो पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है वो कितना होगा, 10t होगा. फिर 10t minus 2t is equal to 48 लिखते थे, तो 8t is equal to 48 आता था, t is equal to 6 आता था. काफी स्टेप्स करने पड़ते थे. रिलेटिव स्पीड से क्या हो जाता, आपने एक को रेस्ट पे ले लिया, उसकी स्पीड उल्टी करके दूसरे को दे दी, टाइम निकाल लिया कि तीसरे वाले को पहले वाले तक आने में कितना टाइम लगेगा. क्योंकि उसको रेस्ट पे ले लिया तो फिर ज्यादा चिंता नहीं रहती है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का हमें उतना ही कवर करना पड़ता है. एक दो स्टेप कम हो जाते हैं, सॉल्यूशन आसान हो जाता है, गाइस. ठीक है, चलिए, I'll just wait for 30 seconds over here because this was all about relative speed. And if you've understood the concept of relative speed, just type yes in the chat box, guys. I really need your responses because it will really help me in understanding whether you are able to understand the questions or not. Because इसके बाद हम questions में जाने वाले हैं, actual questions जो exam में आते हैं. ठीक है? So we'll be moving to the questions part, but before that, I just really want to understand whether you guys have grasped the concept or not. ठीक है, चलिए, I just wait for 10 more seconds. Thank you for the responses, Vaishali, Jyoti, Ketan. Others also, please keep responding, guys. आप लोगों ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो हो सकता है कि ये मैसेज आपको थोड़ा लेट मिल रहा हो, हम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे आगे चले गए हो, बट स्टिल डजंट मैटर, कीप रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, चलिए, now let's move to the questions part, guys. Okay. Now we have already discussed these questions before, but previously we didn't solve them using the concept of relative speed. Now we'll be solving them using the concept of relative speed because they will become very simple and it will hardly take let's say 30-40 seconds or max 50 seconds to solve these kind of questions using relative speed. Okay. Chaliye, please have a look at this particular question, read it carefully and try to use the concept of relative speed in this question, guys. I just start the timer for you. So from today, we won't be spending a lot of time. You know? We'll just try to spend only 2 minutes on one particular question, guys. So your time starts now.
Okay, last 10 seconds. Okay, let's have a look at the solution for the question, guys. So it says A can run at a speed of 10 kilometers per hour, B can run at a speed of 20 kilometers an hour if A starts running at 3 p.m. Now let's say this is my person A, he starts running at 3 p.m. guys, and he runs exactly for how much time in the same direction at 6 p.m. B starts running towards A at 6 p.m. Well, from 3 p.m. to 6 p.m. the person A is running alone. It means A runs for 3 hours. And the speed of A is 10 kilometers an hour. Okay. It's gonna be 10 threes are 30 kilometers. So the person A at 10 kilometers an hour, he would have covered a total distance of 30 kilometers, and now it's 6 p.m. The person A is standing over here, and the time now is 6 p.m. guys. Now, the person B is standing over here and he will be starting the race at the speed of 20 kilometers an hour. Now, what's happening? The distance between these two is 30 kilometers. The person A is going to move towards right at the speed of 10 kilometers an hour. The person B is going to try to catch the person A at 20 kilometers an hour. Let's try to use relative speed over here. Let's try to figure out the speed of the person B with respect to the person A. In that case, I'll just fix the position of A, reverse the direction of speed of the person A, and give it to the person B. Okay, so 20 minus 10 comes out to be 10 kilometers an hour in this right direction, guys. Now B has to move at the rate of 10 kilometers an hour to catch the person A. So distance is equal to speed into time. I have to cover a distance of 30 kilometers. Sorry, B has to cover the distance of 30 kilometers. Speed is 10 kilometers an hour, and let T be the time. So the value of T comes out to be 3 hours. So B will take exactly 3 hours to catch the person A. It means after 6 p.m. it will take 3 hours to catch the person A. So 6 बजे से 3 बजे 3 घंटे बाद कितना होगा? It will be exactly 9 p.m. Okay. So previously we have to assume the time T. फिर we would have taken कि 10 किलोमीटर पर आवर से इसका 10t होता, फिर इसका 30t होता, 20t होता, दोनों को माइनस करते 30 आता, काफी चीजें रहती वहां पे. But using relative speed we can just solve it in a single step wise. Pause a certain person या फिर just stop a certain person over there, reverse the direction of his speed and give it to the other person. That's how you can find the relative speed and solve the question. ठीक है? चलिए. Let's have a look at the next question. Again, this is one of those questions which you have already done. So please have a look at this question once again. But now you have to solve it using the concept of relative speed. जो आगे चल रहा है उसको रोक देना, उसकी स्पीड उल्टी करके पीछे वाले को दे देना, पीछे वाला तेज है उसको पकड़ने के लिए और तेज भागेगा और जल्दी से पकड़ लेगा. इतना ही करना है यहाँ पे. ठीक है, ट्राई करो. I'll give you another 2 minutes to solve this question, guys. Your time starts now.
Okay, I'll just give you some more time to solve the question. And in the meanwhile, I'll just give you some hints over here, guys. So A and B are running in the same direction at the speed of 54 kilometer and 636 kilometer per hour. A is 1000 meters behind the person B, guys. Okay. So let's say this is the position of the person B. So A is 1000 meters behind the person B. So let's keep it as 1000 meters over here. Now, person B, the speed is given as 36 kilometers an hour. Let's convert it in the form of meter per second, guys. So 36 kilometers is going to be, or what we can do is we can just convert these meters into kilometers. That will be a bit easy. 36 kilometers an hour, that's the speed of the person B. 54 kilometers an hour, that's the speed of the person A. And this is given as 1000 kilometers. So let's keep it as 1 kilometer. Now it is asking us, after how much time from now A will be ahead of B by 2000 meters. Okay, so A has to be ahead of B by 2000 meters. It means 2 kilometers. So the position of A has to be over here. Okay. Now let's try to figure out speed of the person A with respect to the person B. Means I'll keep the person B in the state of rest, and now I'll give the speed of B to the person A by reversing it. Okay, so 36 in this direction, 54 in the right direction. So overall speed comes out to be 54 minus 36, which is 80. So 18 kilometers an hour. The person A will be moving towards the person B at 18 kilometers an hour, and he has to reach B, and he also has to move 2 kilometers ahead of B. So the total distance is equal to speed into time. The total distance that the person A has to cover is first 1 kilometers till the person B, and then he has to also move 2 kilometers ahead of B. It means total distance has to be 3 kilometers. Speed has to be 18 kilometers an hour, and let T be the time. Therefore, the value of T comes out to be 3 divided by 18, which is equal to 1 by 6 hours, guys. We can convert it in the form of minutes. So 1 by 6 hours is nothing but 1 by 6 into 60. Okay. Yes, 3. So it's gonna be 10 minutes over here, guys. Okay. Okay. Perfect. So I have an answer from some person. That's great. Yeah. So this is how you have to solve these questions, guys. After how much time from now? Yes, A will be ahead of B by 2000 meters. Yes, he has to travel 2 plus 3 kilometers. Correct, guys? Yeah, perfect. Now let's have a look at the next question. Please have a look at this question and try to attempt this using the concept of relative speed, guys.
चलिए, let's have a look at the solution for this one. So A can read 30 pages an hour, B can read 50 pages an hour. A starts at 3 p.m., B starts at 4:30 p.m. So there's a head start of 1.5 hours over here, right? Okay. So 3 to 4:30 p.m. it means for 1.5 hours the person A will be reading alone. So A can read at the rate of 30 pages an hour. You know? So this is 30 pages an hour. So in these 1.5 hours, A would have read exactly 30 into 1.5, which is 45 pages. Okay. Now this is the position of person A exactly at 4:30 p.m. And exactly at 4:30 p.m. this is the position of person B who is just starting to read, and he'll be reading at the speed of 50 pages an hour, guys. So person B has to catch the person A. Let's stop the person A over here. So person A would have read at the speed of 30 pages an hour. We have stopped the person A and we have reversed the speed of person A and given to the person B. So 50 minus 30 comes out to be equal to how much? 20 pages an hour, guys. So B will be starting at 20 pages an hour and he has to reach till 45 pages. So again, distance is equal to speed into time. I have to reach to a total of 45 pages at 20 pages an hour into T. So T comes out to be 45 by 20 hours, guys. You can convert this in the form of minutes. Just multiply by 60. So 45 by 20 into 60. 23 is a 60, 3 5s are 15, 3 4s are 12, plus 130, guys. So 135 minutes. 135 minutes is exactly 120 minutes of time plus 15 minutes, which is nothing but 2 hours and 15 minutes. So 2 hours and 15 minutes after 4:30 p.m. So 2 hours is 5:30, 6:30 p.m. and 6:30 p.m. के बाद plus 15 minutes और है ना? So it has to be equal to 6:45 p.m. guys. ठीक है? This is going to be the final answer. So आप देख सकते हैं कि using relative speed we can solve this in very less time. Okay? चलिए, तो ये तो हो गया relative speed की बातें. अब हमें move करना है trains की तरफ. So first we'll have a look at the basic concept of trains, how to solve the questions of trains, and then we'll be moving to the questions part, guys. Questions उतने ज्यादा difficult नहीं होते हैं trains के, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो वो questions आसानी से आपसे बन जाते हैं. ठीक है, चलिए फटाफट से trains का concept देख लेते हैं. Now let's say I've been given a train over here, something like this. ठीक है, ये मेरी train है which is moving towards right at the speed of 20 kilometers an hour. Okay, and there's a guy standing over here. ठीक है, ये person है यहाँ पे खड़ा हुआ है and the train is moving at the speed of 20 kilometers an hour. ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ना मीटर पर सेकंड में लेके करते हैं because length उतनी ज्यादा नहीं होती है. Let's keep it as 20 meters per second, guys. Okay. Now this train can cross this particular person. This train can cross this particular person at the in exactly, let's say t is equal to 12 seconds. ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा उल्टा करके भी समझ सकते हैं. मे बी आपके लिए वो ज्यादा आसान हो, तो एक बार उल्टा करके बता देता हूँ मैं आपको. लेट्स से देयर इज अ ट्रेन स्टैंडिंग ओवर हियर. ठीक है, ट्रेन इस वक्त आपकी खड़ी है ना, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. And there's a person standing over here who is moving towards left at the speed of 20 meters per second. And this person is taking exactly t is equal to 12 seconds to cross this particular train, guys. So using this information, you can find out the length of the train, guys. कैसे? आप मान लेंगे कि यार ये जो person है उसने कितना distance travel किया है. The distance traveled is equal to speed into time. The person A was traveling, this is my person A, was traveling at 20 meters per second and he took 12 seconds to cross the train. It means he has traveled a distance of 240 meters. तो 240 meters में उसने train को cross कर लिया, मतलब length of the train was equal to 240 meters. Pretty simple question, guys. 20 मीटर पर सेकंड से 12 सेकंड में 240 मीटर क्रॉस करेगा. अगर हम बोल रहे हैं कि वो 20 मीटर पर सेकंड से 12 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर दे रहा है, मतलब 240 मीटर ट्रेन की लेंथ होगी. इसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी दिया जा सकता है. कैसे? They'll say that the person is not moving. Okay, person is not moving, the train is moving, guys. So let's say now in this scenario the train is moving towards right with the speed of 20 meters per second and there's a person standing over here. Okay, and train is taking a total of t is equal to 12 seconds to cross this particular person. तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ट्रेन ने किया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो आपका कितना डिस्टेंस था? Speed is 20 meters per second, time is of 12 seconds, so exactly 240 meters.
मतलब पर्सन का स्टेट है रेस्ट का, ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी, 12 सेकंड में क्रॉस कर लिया, तो 12 सेकंड में ट्रेन ने कितनी दूरी ट्रेवल की है, उसकी खुद की दूरी ट्रेवल की है ना। ओके, द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल कम आउट टू बी 240 मीटर्स 1 सेकंड। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन बोथ द वेज गाइस। अगर आप रिलेटिव स्पीड थोड़ा समझ रहे होंगे तो वही लग रहा है यहाँ पे। पहले केस में अगर रिलेटिव स्पीड लगाएं हम, तो अगर इसको मैं रेस्ट पे डालूं तो ट्रेन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से राइट में चलने लगेगी, है ना। वैसे नीचे वाले में रिलेटिव स्पीड लगाऊं, मैं ट्रेन को रेस्ट पे डालूं तो पर्सन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में चलने लगेगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं, बहुत सिंपल सा है। क्या, ट्रेन आपकी मूव कर रही है, पर्सन रेस्ट पे है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसकी लेंथ है। It is similar to train is in the state of rest and the person is moving to cross the train. Okay, एक simple concept हो गया. Now, in the second case, what we can do is we can take a platform. So let's say this is a train over here, which is moving towards right at the speed of 20 meters per second. Okay, and there's a platform. Let's say this is my platform over here. ठीक है, या फिर अंदर की तरफ बना देता हूँ मैं प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरीके से. This is my platform. ठीक है, I have been given that platform is of certain length. ठीक है, अभी लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की मुझे नहीं पता, but this is my train, this train can cross the platform. This train can cross the platform exactly in t is equal to 12 seconds. Now again, using this information you can figure out the distance, which is equal to speed into time. Now the speed is of 20 meters per second, time is of 12 seconds, so 12 to the 24. वापस से मेरा आंसर 240 meters ही आ रहा है. ठीक है, but is 240 meters the length of the train? No, in this case it is not the length of the train, because in t is equal to 12 seconds ट्रेन ने एक स्टैंडिंग इंसान को क्रॉस नहीं किया, उसने पूरे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया. तो अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता तो उसकी लेंथ जो है वो बहुत छोटी होती, इसीलिए हम उसे पॉइंट लेंथ गिनते हैं. लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म हो यहाँ पे तो उसकी एक सर्टेन लेंथ होगी, तो वो पॉइंट लेंथ नहीं हो सकती. इट मींस इन दिस 240 meters includes the length of the train plus it also includes the length of the platform guys. ठीक है, now if I have been given that the length of train is equal to let's say 200 meters, I can figure out कि जो बचा हुआ लेंथ होगा 40 meters का, that will be the length of the platform. Or if I have been given that the length of the platform is 40 meters, then I can figure out the length of the train, which is going to be the remaining 200 meters. ठीक है, तो अगर प्लेटफॉर्म को ट्रेन को क्रॉस करना है, so it has to cross his own length and the length of the platform as well guys. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसे समझने के लिए, यही पे बना देते हैं. So let's say this is my train now, है ना, and I have a platform over here like this. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहां पे प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है वहीं पे ट्रेन की एंड भी है ना, या फिर प्लेटफॉर्म वहां खत्म ना हो रहा होगा तो भी बस इतना है कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म के पीछे रहना चाहिए. ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म के आगे निकल गई तो उतना डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करना पड़ेगा, है ना. तो अगर आपका प्लेटफॉर्म चाहे यहाँ पर हो चाहे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आगे की तरफ हो तो भी फर्क नहीं पड़ता. प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना वो कहाँ से शुरू करेगी, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, है ना. सो बेसिकली यू हैव टू कंसीडर बोथ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म. whether it doesn't matter whether ये दोनों एक ही लाइन पे हैं या फिर एक लाइन पे नहीं है. प्लेटफॉर्म बस थोड़ा आगे की तरफ होना चाहिए, प्लेटफॉर्म ट्रेन के पीछे नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है बस हमें. और क्वेश्चन वैसा ही आता है, प्लेटफॉर्म आगे की तरफ ही होता है क्योंकि ट्रेन जो है वो दूर से आ रही होगी, प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस खुद की लेंथ दोनों क्रॉस करके जाना है उसको. ठीक है, let's take an example over here. So this is my train, okay, which is moving towards right at the speed of 30 meters per second, and this is my platform. The length of the platform is equal to 10 meters guys. ठीक है, 10 मीटर का प्लेटफॉर्म है, and this train is taking exactly t is equal to 15 seconds to cross this platform. So again, distance is equal to what? Speed into time. I have to cover at the speed of 30 meters per second in 15 seconds. So 15 3s are 45 in the 450 meters. So train is covering a distance of 450 meters to cross the platform. Is 450 the length of the train? No. ट्रेन की जो लेंथ है उसके साथ साथ उसने प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करना है. तो प्लेटफॉर्म इज ऑफ 10 meters, it means the remaining 440 meters will be the length of the train guys. इसमें लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, सॉल्व करके निकाल लेते हैं 450 मीटर मार्क कर देते हैं, बट नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ अलग से निकालनी है, उसको सेपरेट करना है. क्यों? क्योंकि 15 सेकेंड्स में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, मतलब उसने अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों क्रॉस किया गाइस. ओके, चलिए ये हो गया आपका ट्रेन अलोंग विद अ प्लेटफॉर्म वाला केस.
So till now we have looked over two cases. First, train with a single person case, उसमें ट्रेन की लेंथ अकेली क्रॉस होती है. सेकंड, ट्रेन विद अ प्लेटफॉर्म केस, इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ जो है वो क्रॉस होती है. तीसरा केस होगा ट्रेन विथ अ ट्रेन केस. ठीक है, देख लेते हैं. दिस इज माय फर्स्ट ट्रेन, लेट्स अज्यूम, एंड दिस इज माय सेकंड ट्रेन, लेट्स अज्यूम. ठीक है, सो माय फर्स्ट ट्रेन, दिस इज ट्रेन ए या फिर ट्रेन 1 बोल सकते हैं आप. दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ द स्पीड ऑफ 20 meters per second, and this is my train 2 या ट्रेन B which is in the state of rest guys. ये ट्रेन 1 हो गई, ट्रेन 2 हो गई. अभी आपकी जो ट्रेन 1 है उसको ट्रेन 2 को क्रॉस करने में लेट्स से t is equal to 20 seconds लग जाते हैं. ठीक है, and I have been given that the length of the train 2 is some meters. या चलिए उसको रहने देते हैं, समझते हैं पहले. तो ट्रेन 1 को ट्रेन 2 को क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया? 20 सेकंड्स लग गया. मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. आपकी स्पीड थी 20 meters per second, आपका टाइम भी था 20 seconds, मतलब 400 meters. सो ट्रेन 1 ने जब ट्रेन 2 को क्रॉस किया तो उसने कितनी दूरी ट्रेवल की? 400 meters की. सो इज 400 meters द लेंथ ऑफ द ट्रेन 1? नो, इट इज नॉट. 400 meters is the sum of the length of train 1 plus length of train 2. क्यों? जो दूरी तय कर रहा है t is equal to 20 seconds में, वो कितनी दूरी है? वो ट्रेन 2 को क्रॉस करने की दूरी है. मतलब ट्रेन हैज टू कवर हिज ओन लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन. मतलब ये 400 मीटर क्या है? दोनों का सम है गाइस. अब मान लीजिए क्वेश्चन में एडिशनल इफ मुझे गिवन होता कि लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 इज इक्वल टू लेट्स से 250 meters, तो आपको इससे ट्रेन 1 की लेंथ मिल जाती. क्यों? टोटल उसने कितना ट्रेवल किया? 400 meters. 250 meters अगर ट्रेन 2 की लेंथ है तो बची हुई जो लेंथ होती है ट्रेन 1 की कितनी हो जाती है? 150 meters गाइस. ठीक है ना? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हो, अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर वो मैन है या फिर पोल है, मैन और पोल जो होते हैं उनका डिस्टेंस नहीं होता है, तो मैन या फिर पोल है तो वो जो आंसर आएगा वो ट्रेन की लेंथ देगा. बट मैन और पोल के अलावा दूसरी ट्रेन है, इन दैट केस जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? दोनों की लेंथ का सम होगा. दोनों में से एक की लेंथ गिवन होगी, दूसरी आप निकाल लोगे. दिस वाज द केस इन व्हिच द ट्रेन 2 वाज नॉट मूविंग गाइस. This was the case in which the train 2 was not moving. Now, if we assume that this train 2 is moving towards right with the speed of 5 meters per second, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी बदल जाएंगी. क्या होगा? Now you use the concept of relative speed. You will keep this train 2 in the state of rest and you will give the speed of train 2 to the train 1. तो अब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन 1 with respect to the train 2 कितनी हो जाएगी वो? It's gonna be 20 minus 5, which is 15 meters per second. And now the distance is gonna be speed into time. तो अब आपका speed is 15 meters per second, time is 20 seconds, so 15 to is 300. So 300 meters is the distance that the train has to cover. ठीक है. Now what is this 300 meters? 300 meters is the addition of the length of train 1 plus length of train 2. ठीक है. मान लीजिए अगेन ट्रेन 2 की लेंथ अगर 250 मीटर की गिवन है, तो अब इस केस में ट्रेन 1 की लेंथ कितनी हो जाएगी? 150 मीटर नहीं रहेगी, वो सिर्फ 50 मीटर्स हो जाएगी. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 300 मीटर होना चाहिए. समझ पा रहे हो रिलेटिव स्पीड कैसे आया यहाँ पे? अगर मुझे ट्रेन 2 की स्पीड दे दी, आई हैव टू स्टॉप दिस ट्रेन 2, आई हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन 2 एंड गिव इट टू द ट्रेन 1 इटसेल्फ. अब ट्रेन 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर्स पर सेकंड. उस केस में वो टोटल करेगी 300 मीटर. 300 मीटर विल बी द एडिशन ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन 2 गाइस. ठीक है. अब अगर ट्रेन 2 250 मीटर दे दिया तो बचा वो 50 मीटर क्या हो जाएगा? ट्रेन का. वैसे ही अगर मान लीजिए ट्रेन 2 होता, ये अगर दे देता वो 150 मीटर, तो बचा हुआ जो 150 मीटर होता वो ट्रेन 1 का हो जाता. इस तरीके से कर. वहीं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ना देके अगर उसने इधर दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो अब एडिशन हो जाएगा, 20 + 5 हो जाएगा. राइट है ना? इसको स्टॉप करोगे, इसकी स्पीड उल्टी करके इसको दोगे, तो अभी क्या हो जाएगा? 20 + 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ भागने लगेगी. ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करोगे, उसका आंसर आ जाएगा. तो बस उतना ही ध्यान देना है गाइस कि अगर ट्रेन स्टेशनरी रही दूसरी वाली, आपको पूरी लेंथ मान लेना, या स्टेशनरी ट्रेन को आप प्लेटफॉर्म भी मान सकते हो. स्टेशनरी ट्रेन इज इक्वल टू द प्लेटफॉर्म ओनली. ठीक है. और ट्रेन अगर मूव कर रही है तो उसको रोको, उसकी स्पीड उल्टी करके पहली वाली ट्रेन को दो, आपका रिलेटिव स्पीड बन जाएगा. अब वो दूसरी ट्रेन जो है, क्योंकि वो रुक के वो प्लेटफॉर्म की तरह ऐड करेगी, तो बस आपको सॉल्व कर लेना. फिर बस स्पीड कम हो जाएगी, उसके हिसाब से लेंथ आ जाएगी ट्रेन की. ठीक है. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम ट्रेन के, तो आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की. बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो स्टिल सॉल्यूशन तो हम डिस्कस करेंगे, चीजें आपको समझ में आती जाएगी. ठीक है. चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. प्लीज हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, read it carefully.
Let me just scroll it down a bit. Okay. The very first question of plane train, guys. Read the question carefully and type your answers in the chat. I'll give exactly 2 minutes to solve this question. Your time starts now. You can use the calculator, guys. Last 10 seconds. Okay. A train running at 50 kilometers an hour crosses the platform in 30 seconds. Everything is given in terms of seconds, guys. Let's just convert it. So 50 into 1000, this is meters, divided by 3600, which is seconds. Okay. This is 500 upon 36 meters per second. You know, it can be further done. देख लेते हैं 4 9s are 36, 4 1s are 410, 4 2s are 8, 20, 4 5s are 20. It is 125 divided by 9 meters per second. This is the speed of the train. Crosses the platform in 30 seconds. The distance is equal to speed into time. Okay. Now, speed is 125 by 9 meters per second. Time taken is of 30 seconds. This is 3 3s are 9, 3 10s are 30. So it is 1250 by 3. So these many meters, this is the length. Kiska length hai ye? Length of the train plus length of the platform. Why? Because it is crossing the platform. Platform will have a certain length. Okay. This 1250 by 3 meters is the length of the train plus length of the platform. Let's see what else is given to us. It can cross a standing man in 15 seconds. देखो यहाँ पे काम बन गया. So now again distance is equal to speed into time. तो आपकी स्पीड कितनी है? सेम 125 by 9. ट्रेन तो उतनी स्पीड से चलेगा. स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करने में 15 सेकंड्स लग रहे हैं. 3 3s are 9, 3 5s are 15. आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. तो ये होगा 5 5s are 25, 5 2s are 10 11 12, 5 1s are 5 plus 1 6, 625 by 3 meters per second. Sorry, meters only. है ना? So 625 by 3 meters is gonna be the length of the train. Why? क्योंकि स्टैंडिंग मैन को जब वो क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करती है. तो स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है 625 by 3 meters. तो ये हो गई आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन. So this is known to us. We need to figure out the length of the platform. Length of the train plus platform is 1250 by 3 meters. ठीक है. बस इस इक्वेशन से आप निकाल लोगे. ठीक है. चलिए इसे थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं. यहाँ पे जगह बन जाएगी हमारे लिए. This 1250 by 3 was the length of the train plus length of the platform. क्यों? क्योंकि 30 seconds उसे platform cross करने लग रहे थे. So I've been given length of the train plus length of the platform is equal to 1250. I've just figured out the length of the train is 625 by 3. Fractions के term में लिख सकते हो guys, better रहता है. Plus the length of the platform is equal to 1250 by 3 guys. So the length of the platform is 1250
by 3 minus 625 by 3. तो 625 का जस्ट डबल है तो बस आधा आंसर आ जाएगा, तो 625 by 3 meters. The length of the platform is gonna be 625 by 3 meters guys. चाहो तो इसे डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट स्टिल ऐसे भी सफिशिएंट होता है. ओके, ठीक है. सो पहला काम था इसमें कन्वर्जन का, मीटर पर सेकंड में आपने किया. फिर आपने टोटल डिस्टेंस निकाला, वो था 1250 by 3 meters. इट वाज ऑफ क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, मतलब इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म. ठीक है. फिर लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गई तो आपने टोटल से घटा दिया उसे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल गया. ठीक है. चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं. गाइस यूट्यूब पे इसलिए भी स्ट्रीम कर रहे हैं हम लोग ताकि आप इसे बार बार पॉज करके देख सकें. तो इन केस इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, आप उस स्ट्रीम को पॉज करिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा और सॉल्यूशन दोबारा देखिएगा गाइस. ठीक है. और जो लोग साथ में चल पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, चलते रहिए. Please have a look at this question, guys. Read the question carefully and type your answers in the chat box. Your time starts now.
Okay, let's have a look at the solution for this one, guys. A jogger running at 18 kilometers an hour alongside a railway track is 480 meters ahead of the engine of a 240 meters long train. Okay. So let's say this is our train. The length of the train is already 240 meters. A jogger is running at 18 kilometers per hour alongside the track is 480 meters ahead of the engine. Okay. So the person, this is going to be the engine of the train. The person is 480 meters ahead of the engine. It means this is the position of jogger. He is running at 18 kilometers an hour. Let's convert into meter per second, guys. 18 into 1000 divided by 3600. Double zero goes 18 to 36, 2 5 10. So this is 5 meters a second, guys. 240 meter long train. Train is running at 90 kilometers per hour. So 18 5 is 90. It means 5 5 is 25 meters per second, right? So अगर 18 अगर 5 है तो 90 कितना होगा 5 times. Okay, so 25 meters per second is gonna be the speed of the train, है ना? In how much time will the train pass the jogger? ट्रेन को अगर जॉगर को पास करना है तो ट्रेन को फर्स्ट हैज टू कवर इट्स ओन लेंथ ऑफ 240 meters एंड द लेंथ ऑफ 480 meters, है ना? तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी 480 मीटर और फिर वो अपनी खुद की लेंथ भी कवर करेगी, मतलब a total of 0, 8 plus 4 12, 4 plus 2 6 plus 1 7. So 720 meters needs to be covered by the train. Okay, now distance is equal to speed into time. Now अभी मुझे relative speed यूज करनी है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अब जॉगर भी आगे भाग रहा होगा, अगर मैं जॉगर को रेस्ट पे दे दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना? क्योंकि फिर ट्रेन को सिर्फ 480 मीटर कवर करना पड़ेगा और अपनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, तो इसकी स्पीड मुझे उल्टी करके देनी पड़ेगी ट्रेन को. सो 25 minus 5 comes out to be 20 meters per second. Okay, so I need to cover a distance of 720 meters at the speed of 20 meters per second. So let's give me the time for that one. So t comes out to be 0 से 0 जाएगा 36. Okay, so t is gonna be equal to 36 seconds. So how much time will the train take to pass the jogger? It's gonna be 36 seconds, guys. ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ट्रेन का चैप्टर है वो रिलेटिव स्पीड से आसानी से हो जाता है, तो कोशिश करिएगा कि आप रिलेटिव स्पीड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगर समझ में नहीं आया हो ये तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करना. आई विल ट्राई टू रिपीट द क्वेश्चन. ठीक है, ट्राई करिए. इसमें दो ट्रेन्स आपस में दौड़ रही हैं, है ना, चल रही हैं, दौड़ रही हैं, जो भी बोल सकते हैं. तो कोशिश करो एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट गाइस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलिए, let's have a look at the solution for this one. 550 meters long train running at the speed of 240 kilometers an hour crosses another train running in the opposite direction at the speed of 160 kilometers an hour in 80 seconds. दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन 2. ठीक है, अभी दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया 18 सेकंड्स में. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन? दिस इज माय फर्स्ट ट्रेन, सो दिस इज train 1. The speed is given to us, length is given to us is 540 meters, and the speed is 240 kilometers an hour. Okay, now there's a train 2. We don't know the length of train 2. ठीक है, मान सकते हैं उसको x, या पहले फिलहाल टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना. This is my train 2. This train 2 is running in the opposite direction. मतलब अगर मैंने इसे राइट assume किया तो इसको लेफ्ट assume करना पड़ेगा. It has to be 160 kilometers an hour, guys. ठीक है, दोनों को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 18 सेकंड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स पर सेकंड, गाइस, या फिर किलोमीटर पर आवर में कर लें, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं. ठीक है, सो 240 किलोमीटर्स इट मींस 1000 meters hours, so 3600 0000 goes 4 9s are 36, 4 60s are 3 3s are 9, 3 20s are 60, so it has to be 200 upon 3. So this is nothing but 200 upon 3 meters per second, guys. Similarly, if I talk about 160, so 160 into 1000 meters by 3600 seconds, 0000 goes. So this is 4 9s are 36, 4 into 40. That's it. It has to be 400 upon 9 meters per second. This 200 upon 3 को भी हम एक काम करते हैं, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 9 के फॉर्म में. सो 9 के फॉर्म में ये किस तरीके से रहेगा, गाइस? इट हैज टू बी 600 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड. क्यों हम कर रहे हैं इसको 9 के फॉर्म में? बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आसान होगा. लेट्स कीप इट एज इंस्टेड ऑफ 200 अपॉन 3 600 अपॉन 9 पर सेकंड, सेम टू सेम है. एंड दिस इज नथिंग बट 400 अपॉन 9 meters per second. Okay. Now this is my train 1, train 2 opposite direction में the speed will get added. Okay, so speed of the train 1 with respect to the train 2 will be, train 2 को हम रेस्ट पे ले लेंगे, इसकी स्पीड जो है वो उल्टी करके ट्रेन 1 को दे देंगे. ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? ऑलरेडी इट वाज एट 600 upon 9 प्लस द एडिशन ऑफ 400 upon 9 which is equal to 1000 upon 9 meters per second. And at this speed they have to cross each other. Let's see how much distance they can travel. So distance is equal to speed into time. So speed is 1000 by 9 and the time which is being taken is 18 seconds, guys. So 9 2s are 80, 2 into 1000 is 2000 meters. It means the train 1 has traveled a distance of 2000 meters in total. Okay, now that 2000 meters has to be the addition of initial length of the train 1 plus the length of the train 2. क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस किया मतलब टोटल लेंथ क्रॉस किया, तो टोटल 2000 मीटर है, एक की लेंथ 540 मीटर है, तो बची हुई जो होगी वो दूसरे की लेंथ हो जाएगी. इट्स गोना बी 2000 minus 540. आप इसे डायरेक्टली कर सकते थे. 2000 में से 500 गया तो 1540 और गया तो 1460 मीटर. ओके, सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 इज गोना बी 1460 meters, guys. ठीक है, सिंपल सवाल था. फर्स्ट यू कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड्स and then what you did was you figured out the relative speed. From that you figured out the distance is coming out to be 2000 meters. So the distance has to be the addition of both the trains. First train length is 540 meters, so the length of the other train is going to be 2000 minus 540, which later on comes out to be 1460 meters, guys. ठीक है, चलिए, क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो प्लीज मेंशन कर देना चैट बॉक्स में. Also, if you are able to understand the questions which are discussed in this video, please hit the like button, guys. Chaliye, read the question carefully and type your answers in the chat box, guys. And again, start the timer for you. The time starts now. गाइज, हर बार ट्रेन को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए ट्रेन को बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दोनों को टोटल लेंथ क्रॉस करनी है, मतलब अपनी अपनी लेंथ क्रॉस करनी है. बाकी जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप बिना इमेजिन कर सकते हो, दोनों ट्रेन इक्वल लेंथ की तो x और x हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर करना कितना करना होगा, अब देखो डिपेंड करता है वो. ठीक है,
फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस गाइस, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट मेंशन नहीं होता है, मैं बता देता हूँ आपको, यू हैव टू एज्यूम कि दे आर एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना? So this train is moving towards right at 23 kilometers an hour, and this train is also moving towards right at 18 kilometers an hour. कैसे पता चला मुझे? They are moving in the same direction. तो ये अगर इस साइड है तो इसको भी इस साइड होना पड़ेगा। अब इस केस में क्योंकि दोनों साथ साथ खड़ी हैं, तो दोनों को टोटल डिस्टेंस, दोनों का एडिशन ट्रेवल नहीं करना है, सिर्फ खुद की लेंथ ट्रेवल करनी, ठीक है? तो आप मान सकते हैं कि x किलोमीटर उसकी लेंथ है, इसको लेके सॉल्व कर लो, या फिर आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो जो आ रहा है, ठीक है? वो जो डिस्टेंस आएगा उसको, वही उसकी ट्रेन की लेंथ होगी। ट्राई करो, x लेके भी कर सकते हो, बिना लिए भी कर सकते हो, फिलहाल कुछ नहीं हिंट देता हूँ मैं, खुद से ट्राई करो। चलिए, let's have a look at the solution for this one. Now, as we have taken the reference to be at the same point, क्वेश्चन में मेंशन था नहीं बट मैंने बता दिया था फिर, तो सिर्फ ट्रेन को क्या करना है, दूसरी ट्रेन को पास करना, ठीक है? सो रेडियो स्पीड निकाल लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय ए एंड दिस इज माय ट्रेन बी। द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बी इज हाउ मच? ट्रेन की 18 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स राइट है, इसे मैं स्टॉप कर दूंगा ट्रेन को, उसकी स्पीड उल्टी करके इसे दे दूंगा। 23 minus 18 is going to be 5 kilometers an hour, guys. Okay. The faster train passes the slower train in 36 seconds. Okay, so at 5 kilometer per hour, let's convert in terms of meter per second. 5 into 1000 meters divided by 3600 seconds, double zero goes. It's nothing but 50 by 36. Okay, these many meters per second is the speed. Distance traveled is going to be the speed into the time taken, which is 36. 36 into 36 goes, so it has to be 50 meters. डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो ट्रेन की अपनी लेंथ होगी। क्यों अपनी लेंथ होगी उसकी? क्योंकि उसको जब इस ट्रेन को क्रॉस करना है, ट्रेन को क्रॉस करना है मतलब इस पॉइंट को क्रॉस करना है, तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन अपनी ही खुद की लेंथ पूरी कवर करेगा।
वहीं अगर ये ट्रेन इसके पीछे से शुरू होती तो उसको अपनी लेंथ भी कवर करनी पड़ती और ये लेंथ भी कवर करनी, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो सेम पॉइंट से शुरू हो रही है तो इसको क्रॉस करने के लिए उसको सिर्फ अपनी ही लेंथ कवर करनी है। ठीक है, चलेगा। सो द डिस्टेंस हैज टू बी 50 meters, मतलब लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेन हैज टू बी 50 meters ईच गाइस। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is one of those questions which you would have already seen. ठीक है, so if you want you can just take a screenshot of this thing. You can solve this question in the form of the homework guys. ठीक है, लगे तो screenshot लेकर रख लो इसका, है ना? I'll just give you 5 seconds to take the screenshot and then you can move to the next question along with me guys. 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, this is gonna be the homework guys. We'll discuss this in the next session. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में भी सॉल्व किया हुआ है, बस उसे रिलेटिव स्पीड से नहीं किया था, इस वाले को रिलेटिव स्पीड से करना है, सेम है उसकी तरह ये वाला। ठीक है, चलिए हैव अ लुक एट दिस वन गाइस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें कुछ और पूछा गया, रेशियो पूछा गया स्पीड के बारे में, तो इसे ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, let's have a look at the solution for this one. Two trains running in opposite directions cross a man standing on the platform in 30 seconds and 45 seconds respectively. Let's say for the first train, the speed is x meters per second. For the second train, the speed is y meters per second. As per the question, it says they cross each other in 40 seconds. What will be the ratio of their speeds? It means you have to figure out the ratio of x and y. ठीक है, now अगर आपको एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करना है तो जितनी लेंथ होगी ट्रेन की उतनी ही लेंथ वो ट्रैवल करेगा, है ना? So distance is equal to speed into time. This is the speed, this is the time. So the length of the train is going to be the product of the speed and time. Okay, so the length of the train comes out to be is equal to 30x. Similarly for this one, the length of the train comes out to be is equal to 45y. ठीक है, अभी दोनों टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, इट मींस टोटल डिस्टेंस इज 30x प्लस 45y एंड दिस डिस्टेंस आल्सो इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? लेकिन इस बार स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ट्रेन्स, मतलब रिलेटिव स्पीड के हिसाब से दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक की स्पीड दूसरे की स्पीड में क्या होगी, रिवर्स होके जाके एक्स ऐड हो जाएगी।
total speed has to be x plus y and the time is given as 40 seconds over here. We can just equate that. Okay, so 30x plus 45y is equal to 40x plus 40. Okay, 45 minus 40 is going to be 5y is equal to 40x minus 30x is 10x. So 5 by 10 is equal to x upon y, which is further equal to 1 upon 2 guys. 5 by 10 cut ke 1 upon 2 बच जाएगा. So the ratio is going to be equal to 1 upon 2 guys. ठीक है, चलिए. So ट्रेन्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती नहीं है. और अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को व्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेगा, स्किलेज का जो एप्लीकेशन है उसमें एक सब सेक्शन है which is called as aptitude H. So please check out the subsection guys. वहां पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्रेन्स के. You can check out the questions from that part guys. ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. See you on next session guys. Bye and take care.